So, hello everyone for the final video of this series for Mtech-IT 5th Sem 2023 paper. This was the NSEM paper, and we will be covering question number 8 and 9 in this similar video. So, our first question says that compare decision tree, random forest, and posting highlight strengths and weaknesses of each. तो हम strength, weaknesses, comparison highlights देखेंगे. Decision tree, random forest और boosting. Decision tree की पहले strength की बात करें तो it is easy to interpret. ठीक है, like a flow chart can handle both numerical and categorical data fast to train. इसकी weakness क्या है कि prone to overfitting. ठीक है, overfitting के लिए बहुत ज़्यादा prone है. Memorizes the training data, high variance, small data changes can lead to a very different tree. Comparison highlight की बात की जाए तो the base model for the other. रैंडम फॉरेस्ट की बात करें जाए तो हाईली एक्यूरेट है, रोबस्ट है अगेंस्ट ओवरफिटिंग, लो वेरिएंस होता है, कैन हैंडल लार्ज डेटा सेट्स एफिशिएंटली, एक्सीलेंट एट एस्टिमेटिंग फीचर्स इंपॉर्टेंस. वीकनेस क्या है? लेस इंटरप्रेटेबल है देन अ सिंगल डिसीजन ट्री. It's an ensemble, slower to train than a single tree, builds many independent trees and takes a priority vote parallel process. Boosting की अगर बात करी जाए तो often achieves the highest accuracy among all three, focuses on hard to classify data points, highly sensitive to outliers, can overfit noisy data, training is slow and more computationally intensive. Comparison highlights की बात की जाए तो builds trees sequentially with each new tree correcting the errors of the previous ones. Sequential process होती है. So this was all about decision tree, random tree and posting. Moving to the next question, that is question number 8, part B. Explain the architecture and components of Hadoop, HDFS, Yarn, MapReduce, or describe Spark and its advantages over MapReduce. तो हम Hadoop, HDFS, Yarn और MapReduce की बात कर सकते हैं या फिर Spark in memory processing की बात कर सकते हैं. HDFS जो है वो mainly storage purpose के लिए होता है. Hadoop distributed file system. A reliable distributed file system that stores very large files across many commodity machines. ठीक है, यहाँ जो है वो yet another resource negotiator है, manages cluster resource, CPU memory and schedule jobs. MapReduce की बात की जाए तो a programming model for processing large data sets in a parallel distributed manner across a cluster. Two phases, map and reduce. Primary advantage की बात करें तो cost effective, long term storage and batch processing. यूज केस जो है वो बैच प्रोसेसिंग ETL फॉर वेरी लार्ज डेटा अचीवर्स. ठीक है, अब आते हैं हम स्पार्क इन मेमोरी प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं. Spark can use HDFS for persistent storage but has its own in-memory data structures. Spark also relies on Yarn for resource Kubernetes to manage its sources into cluster. Processing engine की बात करी जाए तो Spark is a general purpose in memory engine that performs similar distributed computing but often much faster. तो Spark जो है वो ज़्यादा fast होता है. Spark जो है वो in processing under unit, ठीक है, इसलिए वो faster है, available है. इसकी जो speed है, process data in memory RAM, which can be 10x, 100x faster than MapReduce, which writes intermediate results to disk. Real-time processing, interactive analysis, machine learning pipelines, graph processing. So this was all about HDFS, Yarn, MapReduce, Spark in memory processing. Moving to the last question for a paper set, that is compare CNNs, RNNs, scans, transfer learning in terms of architecture application. CNN जो है वो convolutional neural network है, main idea of architecture है. ठीक है, इसका यूज कन्वोल्यूशन लेयर टू डिटेक्ट पैटर्न्स के लिए होता है इन इमेजेस. किस चीज़ के लिए बेस्ट है तो ये इमेज रिकॉग्निशन, फेस डिटेक्शन, मेडिकल इमेजेस के लिए बेस्ट है. आरएनएन जो है वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, हैज मेमोरी, यूजेस पास इंफॉर्मेशन फॉर सीक्वेंसेस. इसके अंदर टेक्स्ट स्पीच टाइम सीरीज डेटा होता है. गैन जो है वो टू नेटवर्क्स जनरेटर प्लस डिस्क्रिमिनेटर कंप्लीट होता है. इमेज जनरेशन, डीप फेक्स, डेटा आर्गुमेंटेशन. Transfer learning, use a predefined model on a new problem, faster training for new task with less data. So I hope this was all for our Mtech-IT paper and all of the paper series. We have covered all the papers from internal 1, internal 2, internal 3 and the NSEM paper. Thank you for
watching all the videos.